Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you some form of earth which is in the form of नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सुंदरता के बारे में है। उसके रूप को मैं पृथ्वी के रूप को मैं बताने जा रहा हूँ। दे आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वे पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। एंड दे आर नेचुरली सो मच ब्यूटीफुल, और वो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर हैं। दे आर हेयर वन बाई वन, वे यहाँ वन बाई वन आर गिवन, एक के बाद एक दिए गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप ये समझ सकते हैं। एंड यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम, आप उनके बारे में सूचना एकत्रित कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टीच यू देम वन बाई वन। मैं उन्हें वन बाई वन पढ़ाने जा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ बाइलिंगुअल। मैं द्विभाषी रूप में पढ़ाने जा रहा हूँ। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, ये बहुत ही रोचक क्लास होगी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, आप इसे सरलता से समझ सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दिस इज कैनियन। कैनियन मीन्स होता है घाटी। दिस इज कैनियन, एंड कैनियन मीन्स होता है घाटी। एंड घाटी घाटी। नेक्स्ट वन इज केव। केव मीन्स होता है गुफा। केव मीन्स होता है गुफा, जो विच कैन बी प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर उपलब्ध हो सकती है। ऑन द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड, सो वी कैन से दैट इट इज ऑन द ग्राउंड, जमीन पर उपलब्ध हो सकती है, और बिलो द ग्राउंड, या जमीन के नीचे उपलब्ध हो सकती है। दैट इज केव, दैट इज क्लेफ। क्लेफ एक स्टीप। स्टीप मीन्स होता है तेज। स्टीप मीन्स तेज, और कह सकते हैं एक तेज झुकी हुई चट्टान को कह सकते हैं क्लिफ। सो दिस इज द चट्टान, वी कैन से दैट दिस इज चट्टान, एंड दिस इज कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन स्पेशली ऑफ द seas and oceans. This is the coastal region of seas and ocean. So this is coastal region where where we find the bank of seas, and we can say that bank of oceans is known as coastal region. So this is deciduous forest, deciduous forest। deciduous forest means होता है पर्णपाती वन, अर्थात ऐसे वन जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं टू प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ वाटर। कंजम्पशन ऑफ वाटर, वाटर के कंजम्पशन को रोकने के लिए गिरा देते पत्तियों को, उसे कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन इज रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है उस वन को वर्षा वन कहते हैं। दिस इज डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, वेयर वी कांट फाउंड एनी ट्री एक्सेप्ट द कटीले पौधे, या कांटों वाले पौधों के अलावा कुछ नहीं मिलता, वो होता है डेजर्ट। एंड कहते हैं फजार्ड। फजार्ड 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 मीन्स होता है ऐसा सकरा समुद्री मार्ग जिसके किनारे, दोनों किनारे ऊंची चट्टानें हों और सकरा समुद्री मार्ग हो, उसे कहते हैं फजार्ड। फजार्ड। गीजर। गीजर गर्म पानी का सोता जो होता है उसको गीजर कहते हैं। गर्म पानी का सोता उसे कहते हैं गीजर, गर्म पानी का सोता। द sources of hot water from the earth, and we can say that that is geyser. From here we get hot water. This is glacier. ग्लेशियर में होता है हिमनद। हिमनद अर्थात बर्फ की चट्टान जो तैर रही होती है, उसको कहते हैं ग्लेशियर। नेक्स्ट वन इज हिल। हिल मीन्स होता है पहाड़ी। वी कैन से सी दैट दिस इज हिल which is known as पहाड़ी in the mountain region, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। where we cultivate the the plants of we can say the plant of tea we cultivate here,
the plant of coffee we cultivate here in this region. So we can say that this is a next one is iceberg. Iceberg means होता है बर्फ की तैरती हुई चट्टान, पानी में तैरती हुई चट्टान बर्फ की, उसको आइसबर्ग कहते हैं. नेक्स्ट वन इज आइलैंड. आइलैंड मीन्स द्वीप. द्वीप अर्थात समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ एक छोटा सा स्थल जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति का रूप होता है, उसे कहते हैं आइलैंड. आइलैंड या we can say lake means the water surrounded by all sides which is not flowing. जल जो चार तरफ से घिरा हुआ है from rocks or land and which is not flowing, जो बह नहीं रहा होता है, उसको लेक कहते हैं. नेक्स्ट वन इज माउंटेन. माउंटेन तो होता है पर्वत. we can say that this is the mountain, and we can say that this is the mountain which is known as we can say that this is known as something which is so beautiful. To climb it is a mission of the most of the Indians are foreigners. So we can say that this is a mountain which is in the form of very high रॉक. हाई रॉक के फॉर्म में है, इसे माउंटेन कहते हैं. पेनिनसुला. पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप. प्रायद्वीप which is surrounded by three sides by water and one side is land. So this is peninsula. Peninsula. Next one is plain. Plain means होता है मैदान, which is known as मैदान. We can say that North India plain, उत्तर भारत का मैदान, in which we see the high numbers of cultivation of cereals. Cereals अनाज के ज़्यादा मात्रा में उत्पादन को हम कह सकते हैं होता है मैदानी क्षेत्रों, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, in the northern plainy region. So next one is plateau. Plateau means पठार. पठार. We can say that this is plateau. Plateau means होता है पठार. पठार means highland, उच्च भूमि, from the side of the highland, if some area is gone to down, जो नीचे चली गई है, and some is raised, जो उठी हुई है, that is known as plateau. उसको plateau के रूप में जाना जाता है. River. River means नदी. We know it well that this is river, and river is the form of water. वो जल का रूप है which is flowing, जो बह रहा होता है, that is river. And next one is savanna. घास के मैदान को सवाना कहते हैं. The grassland region of in the world is known as savanna. We can say that sea. Sea means समुद्र. समुद्र वो हम कह सकते हैं sea. Sea means समुद्र. And next one is taiga. Taiga means कह सकते हैं coniferous या शंकुधारी वृक्षों वाले जगह को taiga कहते हैं. And where the all sides is surrounded by we can say that snow. It is surrounded by snow. ये snow से घिरा हुआ है. So it is taiga. Next one is volcano. Volcano means होता है, what is meaning of volcano in Hindi? In the meaning of volcano in Hindi is, we know it well very simply, that is very simple, in the form of very good reason around the world. We know it well that this is known as we can say that this is the part of the earth from where the hot gases are releasing, that is volcano. And
The meaning of volcano, we know it in Hindi, is that is, we can say that this is very simple, but I'm not recollecting right now the meaning of volcano. Volcano is what is in Hindi, that is perhaps to be Jwalamukhi, right? So the meaning of volcano is Jwalamukhi. Jwalamukhi is the meaning of volcano. I got it. So the next one is waterfall. Waterfall means होता है झरना, which is flowing from high of the cliff, or what high of the rock, which is falling down, and which is in the form of very fresh water, that is known as waterfall. And next, the last one is water wetland. Wetland means होता है नम भूमि या जलीय भूमि. Wetlands means जलीय भूमि या नम भूमि, which is in the form of very good area, which is known as wetland. And we can say that we have studied these all pictures in a very interesting way, and I have taught you some words so that you can know in the form of pictures, and you can gather information in your mind about these all pictures. So dear, this is good for you, and you should spread this amongst your brothers and sisters, amongst your teachers, and amongst your friends, so that they can be benefited by this. So please, these words, with these words, I'm going to end my video. Thank you very much.